and we know it very well, matter is anything which occupies space and possesses weight and whose presence can be detected with our five senses. Matter is anything. So pen is matter, rock is matter, paper is matter, table, chair, the home itself, roads, vehicles, everything is matter. And this matter consists of different types of elements, different elements. See the plastic, we know the plastic, polythene. In scientific language, plastic is called as polythene. And this plastic consists of, polythene consists of ethene molecules, number of ethene molecules repeated. And ethene consists of carbon and hydrogen elements chemically. So in that sense, what we can say, every matter consists of some different elements and their quantity may be different. So analytical chemistry is mainly dealing with that part. So what the quality, which elements are present and how much quantity of this element is present. This is the part of analytical chemistry, simply what we are saying. So analytical chemistry is dealing with qualitative analysis and quantitative analysis. So analytical chemistry is a branch of chemistry where we are dealing with separation, identification, and quantifying the amount of different substances, chemical elements, chemical composition in a given matter. That is nothing but you can say analytical chemistry. So yesterday we have started with that. कल हमने उसी के साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है. सो कल जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री देखा था. दूसरा हमने डिस्कस किया उसके अंदर व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री. जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं. तो फर्टिलाइजर्स ऐसे ही नहीं बना जाते, किसी भी प्लांट्स को पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है. तो उस फर्टिलाइजर्स के अंदर कौन सा कंटेंट होना जरूरी है और कितनी मात्रा में होना जरूरी है ना. जैसे कि यूरिया नाम का कंटेंट हम जानते हैं फार्मिंग में. यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो डिफरेंट क्रॉप्स को यूज किया जाता है. तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है. तो वो कितनी मात्रा में चाहिए, मतलब कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट, दैट मैटर्स. सो उसी आधार पर फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं. कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन लेना है, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द composition of the soil. And so that's why composition of the soil is studied in agriculture when we have to have a good production of the crop and all. Same like that in medical sciences, medicine, when we have the poison in our body, and so doctors or the lab persons analyze the poison, what the poison actually we have that person has taken in usually, and how much quantity of that poison has entered into the body of humans, patient and all. So this is also application. There are many industries, there are many substances, cosmetic industry, there is a sugar industry, there is a chemical industry, there is a drug industry. Drug means medicine industry. तो जो medicines बनाए जाते हैं, हर medicines के अंदर भी which elements are present and how much quantity of it has to be present, that is very well studied, that is analyzed, and accordingly the quality is controlled. So that's why the principles of analytical chemistry are very important, and that's what we have seen that the principles of analytical chemistry are useful in general chemistry, as well as in organic chemistry and in case of inorganic chemistry. So they are important, and that's what we discuss here. Also, we are saying what is analysis. Analysis is what we have to investigate which elements are present and how much quantity is present. And for that analysis of the substance, for the analysis of the matter, we are dealing with very small quantity of the substance of the matter, or you can say that is called a sample, very small sampling. And this sample depend upon how much sample we have taken, that can be classified into semi-micro analysis, micro analysis, like that. So there are different ways how we can have this analysis, and there are different methods of this analysis. We have the classical method of the analysis, we have some weight methods of the analysis, we have some modern instrument of the analysis. कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी आजकल मिलते हैं जो रेडीमेड होते हैं. कल मैंने उसके लिए एग्जांपल दिया था आपको, ऑक्सीमीटर हम लोग यूज करते हैं. कोरोना के पीरियड में हम हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर 1500-1600 में एक इंस्ट्रूमेंट आता है 2000 में, और वो इंस्ट्रूमेंट सीधा हमें यहाँ पे लगा देते तो हमारे पूरा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है वो बताता है, पल्स रेट कितना है वो बताता है. सो दैट इज व्हाट वी कैन से. ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं जो एनालिटिकल टूल करके यूज किए जाते हैं. दैट इज ऑल्सो वी आइडिया. एंड ये जो एनालिसिस है दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, और ये दोनों अप्लाई किए जाते हैं केमिस्ट्री में मेनली for the inorganic substances and for organic substances. कल हमने ये भी देखा है. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं. तो कल हमने टॉपिक देखा था व्हाट आर द केमिकल मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट आर द केमिकल मेथड्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. बोथ वी आर सीइंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड कल के टॉपिक में जो सबसे लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज हियर यू कैन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एरर्स.
while presenting the data or while presenting the measurements. See now here, analysis won't be possible without performing any experiment, without any observations, and without putting any measurements and data. So whenever we want to analyze any of the matter, any of the substance, we'll have to take the sample out of that. We'll have to perform some experiment. डिपेंड, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसके आधार पर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का डेटा मतलब वैल्यूज आते हैं, और उस वैल्यूज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ता है, डेटा में प्रेजेंट करना पड़ता है. अगर उसे प्रॉपर डेटा में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलेगा, है ना, एक मीनिंग नहीं मिलेगा. जैसे कि हम लोग बीमार करने के बाद, आज की तारीख में हम बीमार करने के बाद डॉक्टर के पास जब चले जाते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हैं. अभी हमारे ब्लड के टेस्ट होते हैं, यूरिन के टेस्ट होते हैं, कई सारे टेस्ट हमारे किए जाते हैं व्हेन वी आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एनी ऑफ द रीजंस. किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइज होते हैं और डॉक्टर को अगर रूट कॉज पता करना है तो हमारा ब्लड दिया जाता है लैबोरेटरी में, और फिर हमारे ब्लड के अंदर के कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, हमारा प्लेटलेट चेक किए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर के आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, सारी चीजें चेक की जाती है. तो नॉर्मल बॉडी के अंदर वो होते कितने, उसका एक रेफरेंस रेंज होता है, और वो अगर कम ज्यादा हो चुके तो वो फाइंड आउट किया जाता है कि आइदर प्लेटलेट काउंट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड, आरबीसीज आर आइदर एडिक्वेट और इंक्रीज और डिक्रीज, ये चेक किया जाता है, और उसके आधार पर डॉक्टर के सामने पूरा डेटा आ जाता है कि क्या दैट इज इट सिंपली इटसेल्फ इज एनालिसिस. वो भी एक एनालिसिस होता है, मतलब ह्यूमन ब्लड का एनालिसिस होता है, ह्यूमन यूरिन का एनालिसिस होता है ना, बोन मैरो का एनालिसिस होता है, कई सारी चीजों का एनालिसिस होता है. दैट इज अगेन दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री टू अगेन. बट ये डेटा यहाँ पे जो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल रेंज आप जाते हो ऑलमोस्ट 12 टू 16 के बीच में उसका नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज. सो अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन 12 टू 16 के बीच में है तो दैट इज द नॉर्मल रेंज. उससे कम या उससे ज्यादा है तो दोनों केस में प्रॉब्लम है, दोनों केस में प्रॉब्लम है. नॉर्मली कम होता है ना. हमारे यहाँ पे तो मतलब खास करके हियर इन इंडिया और महाराष्ट्र, हम खास करके फीमेल्स का अगर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मली वो 12 के नीचे होता है मैक्सिमम केसेस में, 9 7 वगैरह होता है, एंड उसके कारण एनीमिक होता है. ये डेटा, तो यही डेटा बताता है कि अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो दैट इज द एनीमिक, ब्लड कम बोला जाता है उसे. हाँ, अगर 12 टू 16 के बीच में तो राइट है. सो दैट्स व्हाई whenever we have the experiments on any of the matter, any of the substance, that data has to be produced very well. And this is that's why we need a mathematical operations, some mathematical tools, how to present the data. Otherwise, it don't have the interpretation. है ना. नॉर्मली हम बोल सकते हैं मेरे बॉडी के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है ना, ऐसा नाखून दबा देंगे, ये हमारे टिपिकल तरीके होते हैं, दबा देंगे, हाँ मेरा ब्लड ज्यादा है. इट्स ऑफ नो यूज unless and until we test it in the laboratory. We don't have the perfect analysis of this one or perfect data. We won't be able to tell that. So that's why analytical chemistry के अंदर mathematical operations, mathematical data, how to present the data, that matters a lot. And hence we have yesterday seen there are different methods where we are going to present this data over here. ठीक है. तो सबसे पहली जो बात आती है that is you can say scientific notations. Okay. सबसे पहली जो important बात आती है that is what we can say we have the scientific notations for that. Okay. Scientific notations. So there are many scientific notations and there are many ways how we are going to present the data. जिस तरह से हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं उसके कई सारे साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, और उस नोटेशंस के आधार पर हम लोग डेटा वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्या साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं? सबसे पहले देखिए कि आप लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट जानते हो केमिस्ट्री के अंदर. एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है? 6.022 into 10⁻23. दिस इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ये शायद आपने 10 में भी देखा था, अभी भी देखते हैं हम लोग. So this is called as Avogadro's constant, 6.02 into 10⁻23. This is one of the important way to present the data. Data present करने का एक important तरीका है. इसे scientific notation के format में हम n into 10⁻n ऐसा कहते हैं. See, n into 10⁻n ऐसा कहते हैं. So this is here. तो ये जो n है, this n represent the numerical value which is between 1 to 10. 1 to 10 के बीच में digit होते हैं n के. Isn't it? सो केमिस्ट्री में कोई भी आंसर अगर हमें प्रेजेंट करना है, बाद में देखिए कई सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है. ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कई सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं. सारे न्यूमेरिकल के आंसर जनरली 1 to 10 के बीच में देना है, 2 डिजिट्स में मैक्सिमम देना है. बाकी वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पावर, 10 के पावर में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशंस इन द केमिस्ट्री जो हम इसी चैप्टर के अंदर सीखते हैं. ये एवोगाड्रो का नंबर देखिए, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर जो इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है. ये जो n है 6 है, 6.022, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n. तो डिजिट्स और वैल्यू ऑफ n मस्ट बी 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, लाइक दैट. यहाँ पे 6.02 है.
and this is the 10 and this is the power of 10. This small n represent the exponent. Small n represent the exponent, that is you can say indices उसे हम लोग कहते हैं, exponent कहते हैं, that is the power of 10. 10 का power कितना है? So n represents this value which is between 1 to 10, digits between 1 to 10, and this small n represents the exponent. Exponent, that is, this is the power of 10 or exponent of 10. That can be in plus, that can be in minus. So ये जो exponent है, this exponent n can be in plus or can be in minus. So value of this can be in minus, can be in plus. तो कई सारे values होते हैं जिसे हम लोग plus में और minus में हम लोग present करते हैं. Because देखिए, chemistry के अंदर we are dealing with very very small values. है ना? हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर देखा है जिसके अंदर हमने यूनिट्स देखे थे. फिजिक्स में आपने एक चैप्टर देखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और देखना है वहां पे कई सारे यूनिट्स होते हैं. और जैसे डेली रूटीन लाइफ में हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम लोग अगर कुछ सामान लेना है, मतलब शुगर लेना है, पीनट्स लेने हैं, तो हम लोग केजी में लेते हैं. मिल्क लेना है तो लीटर में लेते हैं. तो 1 लीटर 1 केजी 2 केजी ये अमाउंट के साथ हम डील करते हैं. केमिस्ट्री के अंदर जब हम डील करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर वी हैव टू डील विद वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. 0.5 ग्राम, point not 5 gram, that is microgram, milligram, डेसी, लाइक दैट. देयर आर डिफरेंट यूनिट्स जिसके काफी स्मॉल अमाउंट के साथ हम कंसर्न होते हैं. तो उस स्मॉल अमाउंट को हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें ना एक ऐसा भी वैल्यू हो सकता है, दैट इज यू कैन से 4 into 10 raised to minus 2. ये भी एक तरीका होता है. और यू कैन हैव योर 4 into 10 raised to 2, ऐसा भी एक वैल्यू होता है. दोनों वैल्यू में फर्क है. हियर 4 is representing this value which is digit between 1 to 10, and this 10 का पावर है -2. 10 का पावर -2 मतलब ये डिजिट के अंदर हमें पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो मैं अगर नॉर्मल में से कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 0.04 इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा. सो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है. दिस इज 0.04. चलो अगर ये ग्राम है तो ग्राम, अगर ये नंबर है तो नंबर, तो वेट है तो वेट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, इसमें भी ले सकते हैं. यूनिट कुछ भी हो सकता है. मेरे पास अगर इतना 0.04 ग्राम, तो इस वैल्यू को ऐसा रिप्रेजेंट करने से बेटर है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये तो छोटा वैल्यू था 0.04 ग्राम. अभी इसका देखिए ना, इसका 6.02 into 10 raised to 23. 10 raised to 23 इसका मतलब ये है, ये जो डेसिमल है, ये 23 से इस तरफ शिफ्ट करना है हम लोग. तो 6 के ऊपर 23 जीरोस देने, 6 के ऊपर 23 जीरोस देने. अब देखिए आप काउंट करते हैं, कोई अगर तुम में से काउंट करेगा तो अच्छा है. कोई भी आप तुम में से एक साउंड अपना अनम्यूट करो और मुझे काउंट करके दिखा दो. इस वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. पहला 6 के बाद डिजिट था, डेसिमल था. डेसिमल के बाद हम लोग एक जीरो ऐड करते हैं, लाइक दिस. हाउ मच इट इज? Is there anyone? How much it is? कोई भी एक बंदा आप में से अपना आवाज अनम्यूट करे और बोले कितना है? How much it is? Is there anyone listening to me or not? So I'm not getting any voice from your side. So anyone please, just आपका आवाज अनम्यूट करो और बोलो how much is this value? 60. It is 60? Yes, sir. Yes. अभी काउंट करो आप, कितना है? 600. अब कितना है? 6,000. Very good. 60,000. How much? 6 lakhs. How much? 60 lakhs. How much? 6 crores. How much? 60 crores. Very good. Come on. Or 600 crore. okay. Or 6,000 crore. okay. Or 60,000 crore. और ओके है ना. मोस्टली हम लोग ब्लॉक होते हैं यहाँ पे. इतना काउंट कितने जीरो हो गए देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोस हो गए. एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने काउंट कहां तक किया? 10 raised to 23. मतलब यहाँ पे डेसिमल 23 से इस तरफ शिफ्ट करना है आपको, तो यहाँ पे 23 जीरोस होंगे. वी वोंट, मतलब हम लोग 11 में आ चुके हैं, हम लोग 12 13 मैक्सिमम 15. एक लेक्चर में मेरे पास बच्चों ने 15 तक काउंट किया था. वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन जानते हैं, तो 15 तक काउंट किया. 15 के बाद हमारा काउंटिंग खत्म होता है. इतने स्मॉल अमाउंट के साथ हमें डील करना पड़ता है, बड़े अमाउंट के साथ डील करना पड़ता है केमिस्ट्री के साथ. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द साइंटिफिक नोटेशंस लाइक दिस वन. सो दैट्स व्हाई साइंस में जनरली जो रिजल्ट्स होते हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, इस नोटेशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. 10 into 10 raised to 4, 10 raised to n, sorry, 10 raised to n. So this n represent digits between 1 to 10. That means here आपको digit maximum 2 digits में लिखना है. यहाँ पे देखिए 6.0 6.0 मतलब ये 1 digit में मैंने रिप्रेजेंट किया है. ऐसा हम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 60.22 into 10 raised to, अभी पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया तो 22 तक आएगा, लाइक दिस. इतना आएगा. समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. जनरली
like this is presented between 1 to 10, तो ये 6 पॉइंट के इसमें जनरली वो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट तक के अलाउड होता है। So this is the way how the notations has to be used. So this is 10 raised to minus 2 or here 10 raised to 4, 10 raised to 2 or 4 into 10 raised to 2, तो इसका मतलब होता है 400 ऐसा वैल्यू है। तो 4 into 10 raised to 2 का मतलब decimal point has to be shifted to the 2 points here and here decimal has to be shifted by 2 over here. So yeah, that's why this value is 0.04 and this value is 400. देखिए कितना डिफरेंस होता है। So that's why this is the exponent, this is the power. ये आप जानते हो ऑलरेडी, आपने शायद देखा भी होगा, कुछ बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन ये हमें है थोड़ा रिवाइज करना है, that's what we are discussing. Clear with this? So this is the scientific notation what we are using here. So there may be a larger values like this one what we can present here. तो larger value ऐसा लिखेंगे तो पढ़ना मुश्किल होगा, है ना? और गलती से मानो आपको आप कहिए आपको लाइफ में अगर इतना सारा पेमेंट मिलता है तो हम पेमेंट काउंट करते करते पागल हो जाएंगे, इतना सारा पेमेंट ये मिलेगा तो, क्योंकि है आप जानते होंगे कि आईआईटी से बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें काफी अच्छा पेमेंट मिलता है। मतलब पिछले साल इंडियन आईआईटी से जो प्लेसमेंट हुआ, टॉप प्लेसमेंट हुआ, उसका प्लेसमेंट का पेमेंट था 2 करोड़ पर एनएम का पैकेज था। देखिए 2 करोड़ पर एनएम का पैकेज है ना? सो इट्स अ बिग पैकेज व्हाट वी गेट हियर। द फ्रेशर्स हु गॉट सिलेक्टेड राइट फ्रॉम द आईआईटीज, उनको इतना पैकेज मिलता है। सो मुझे लगता है कि इतना पेमेंट हमारे हाथ में आएगा तो हम गिनते गिनते पागल हो जाएंगे, इतना पेमेंट होता है कि 2 करोड़ के ऊपर प्रॉपर जीरो रखे कि नहीं हमने रखे। सो दिस इज व्हाट वी कैन। सो in chemistry when we are dealing with the larger amounts or smaller amounts, we have to present in a scientific way like this one. So this is the notation what we use here. Clear with this? So this is one of the important methods, scientific method what we use for representing the larger or smaller values in chemistry. Number one. Okay. Now number two is that we have to go for the additions as well as we have to go for the subtractions and for the multiplications. See now there are three things or three process what we can deal with these values. We have to have the addition of these values, we have to have the subtraction of these values, we have to have the multiplication, we can have the multiplication of these values. So if we have the values in the exponent format, then how we are going to add, how we are going to subtract, how we are going to multiply them. Actually this is the very fundamental part of mathematics what we are discussing 8th, 9th and 10th standard, laws of indices and all. अगर हमें कोई भी दो फिगर अगर ऐड करने हैं तो दो फिगर में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉज ऑफ इंडिसेस के साथ उनके एक्सपोनेंट सिमिलर करने पड़ते हैं, एक्सपोनेंट सिमिलर करने पड़ते हैं। मानो यहाँ पे आपका 4 into 10 raised to 2 है, ओके, और यहाँ पे आपको है कि 3 into 10 raised to 3 है, लाइक दिस, ये वैल्यूज। तो दोनों फिगर को ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग, दोनों का जो एक्सपोनेंट देते हैं एक्सपोनेंट डालने का, तो दोनों का एक्सपोनेंट या तो 2 करना पड़ेगा या तो 3 करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके हम उन्हें उसे ऐड कर पाएंगे। तो दोनों का ये ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए डेसिमल आइदर शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल आइदर शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, और डेसिमल जब शिफ्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली पावर बदलता है। ओके, अभी इसे 10⁻³ में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल मुझे उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 10⁻³ में आएगा। सो मैं ऐसे ऐसा कर सकता हूँ कि 0.4 into 10⁻³ कर सकता हूँ, मतलब 0.4 बनेगा into 10⁻³ हो सकता है। और इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है 4 into 10⁻² होता है, लाइक दैट, क्योंकि अगर इसे 2 में कन्वर्ट करना है डेसिमल ये पे शिफ्ट कर दिया 2 में आ जाएगा, लाइक दैट। तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब अभी क्या हो सकता है कि इसके हम लोग एडिशंस कर सकते हैं अगर उनका ये एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा तो। सो ये तो हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस मैथमेटिक्स में अपने देखे थे, बेसिकली देखे थे 8th 9th 10th में, यही रूल्स है। अगर वी हैव टू हैव द एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फिगर्स, दिस नोटेशंस, देन लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से एक्सपोनेंट सिमिलर करने पड़ते हैं बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट, then we can add them, then we can subtract them. और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऐड करते हैं, है ना? ये भी हमने देखा है कि एक्सपोनेंट अगर ऐड करेंगे, मतलब यहाँ का 2 था, यहाँ का 3 था, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 का पावर 5 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। These are the ways how we are using over here. So this process has to be done over here when we are dealing with mathematics. Clear with this? So these figures can be added, can be subtracted, or can be multiplied. That happens here while presenting them. So this is, you can say, mathematical operations. What we need to deal with, whatever the observations we have out of this experiment, whatever the data we got out of the experiment, that has to be presented here in this format. Clear with this? Now, next is what we can say is the precision and accuracy. Let's move to the next topic, what is the precision and accuracy. Precision and accuracy. Scenario. What is this precision and accuracy? It's very important. Either whatever the experiment we have done, and at the end of this experiment, we have some observations, we have some observed values, we have some data at the end of this experiment. मानो हम लोग लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको बताया जाता है ना, हम दुकान में चले जाते हैं
और दुकान में जाने के बाद हम मानो 1 kg वहां से शुगर लेके आ रहे हैं, और आज के दुकान में तो इलेक्ट्रॉनिक वे मिलते हैं, है ना, उस इलेक्ट्रॉनिक वे के ऊपर उसने हमने 1 kg शुगर उसको मांगा, उसने वहां पे 1 kg दिया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आपको या तो 1 kg दिखाया जाता है या तो 1000 ग्राम दिखाया जाता है ना। अगर दुकान वाला आपको 1000 ग्राम दे देगा तो थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। अगर वो 1000.010203 करेगा या 1000.123 करेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा दिया, 101 दिया, लाइक दैट। हाँ, वो थोड़ा कम दिया तो थोड़ा बुरा लगता है, एक्यूरेट दिया तो इट्स ओके, चलो इट वाज अ फेयर डील। लेकिन जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ही दे दे, है ना। दैट इज यू कैन से कि ये डेटा प्रेजेंट करने की बात है, वो डेटा आता है ना। हम लोग लेबोरेटरी में आपको बताया जाता है कि चलो आप लैब में जाते हो और ब्यूरेट आपको दिया जाता है। ब्यूरेट आप जानते हो, ब्यूरेट जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ब्यूरेट इज जिसके साथ वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं हम लोग, और जो जहाँ पे वो मेजरिंग होता है, मतलब वहाँ पे कैलिब्रेटेड होता है। ब्यूरेट इज अ ग्लास का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे हम लोग कैलिब्रेशन होते हैं, हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, 2 ml 3 ml 10 ml ऐसा हम लोग वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। सो मानो उस ब्यूरेट के अंदर हमें एसिड लेना है और हमें 10 ml का एसिड लेना है या 10.5 ml एसिड लेना है आपको। अब ये 10.5 ml आपको एसिड लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे काफी सारे बच्चे अभी मेरे लेक्चर में यहाँ पे दिखते हैं मुझे, 30 बच्चे ऑलमोस्ट अटेंड कर रहे हैं लेक्चर। तो अभी इतने सारे बच्चों में से हर एक को बताया जाता है कि आपको ब्यूरेट पे 10.5 ml आपको वो एसिड लेना है, डाइल्यूट एसिड लेना है। हर एक बंदा वो कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल लेवल अलग ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है। कोई 10 पॉइंट बराबर 5 लेगा, कोई 10.6 लेगा, कोई 10.4 भी लेगा। That error it happens, that may happen because that is a personal skill. एक हर बच्चे का अपना पर्सनल स्किल होता है कि इंडिविजुअल तरीका होता है इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने का, ऑब्जर्वेशन लेवल होता है ना, एक एक्सपेरिमेंट हैंड होता है, इस तरीके होता है। तो इन दैट सेंस दो आपको पूछा गया है कि आपको 10.5 ml लेना है, लेकिन इंडिविजुअली कोई बच्चा 10.6 लेता है, कोई बच्चा 10.4 लेता है, कोई 10.4.5 लाइक 10.45 ऐसा लेता है। सो वेरी कर सकता है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना था? 10.5 था, लेकिन बच्चे क्या ले रहे हैं देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट 10.5 था, अभी बच्चे कितना ले रहे हैं? 10.4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 10.6 ले सकते हैं, इन बिटवीन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1, ये यहाँ पे एरर होता है, ये एरर होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। अब देखिएगा कि एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल ट्रू वैल्यू, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो आपको बताएगा कि आपको लेना कितना है, तो इट वाज 10.5, दैट वाज अ ट्रू वैल्यू व्हिच वाज एक्सपेक्टेड टू मेजर। बट इंडिविजुअली या फिर मे बी अ इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, कभी-कभी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट का ही प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग एक दुकान से अगर 1 kg शुगर लेके आते हैं, तो दूसरे दुकान पे वो शायद 1 kg नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 0.2 से 0.4 से, दैट मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हम जब मेजरमेंट करते हैं तो देयर मे बी चांसेस दैट देयर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर और देयर कैन बी इंडिविजुअल एरर, किसी भी तरीके से एरर हो सकता है हियर इन मेजरिंग द डेटा, हियर इन द मेजरमेंट, हियर इन द ऑब्जर्वेशंस। सो दैट्स व्हाई this is what we can say, this is what we can say, this is the error, that उसे हम लोग एरर कहते हैं। so there is always a true value, there is always a accepted value, जो true value होता है, जो accepted value होता है, but there may be a bit deviation from that, there may be some deviation from that, and nearness to that true value, nearness to that true value is called as accuracy। मतलब 10.5 के जो भी बच्चा आप में से ज्यादा क्लोज जाएगा, ज्यादा नियर जाएगा, that has the more accurate reading। 10.5 एग्जैक्टली तो कोई नहीं ले पाएगा, दुनिया में कोई भी नहीं ले पाएगा, कोई साइंटिस्ट भी नहीं ले पाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो इंस्ट्रूमेंट से लेने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कुछ एरर होने की चांसेस होते हैं। सो इन दैट सेंस 10.5 is a expected value, is a true value, is a accepted value, but everyone will have some mistake, or every instrument will have some mistake, some error, and because of it will have the close reading to 10.5, 10.5 के close होगा, and the closeness, that nearness to that value is called as accuracy। so जो ज्यादा करेक्ट होगा उसे accurate कहते हैं हम लोग, जो ज्यादा क्लोज होगा उसे accurate कहते हैं हम लोग, and उसके अंदर जो difference होगा that is nothing, the error, this error is represented here, that error is due to the sensitivity, or is due to the least count, उसे least count कहते हैं, and this least count is nothing, this one। आपको बताया गया था कि 10.5 रेटिंग लेना है, लेकिन बच्चे उसके अंदर थोड़ा कम ज्यादा करते हैं, मिस्टेक करते हैं, that is expected to 0.1, 0.1 इतना होता है, तो हो सकता है कि that reading 10.54, it is accepted। 10.6 that is also acceptable because it is close to that, close to 10.5 like that। हाँ, इससे अगर कम होता है, 10.3 आ रहा है किसी का, तो 100% wrong है, 10.7 आ रहा है तो 100% wrong है, because they are not near to 10.5। so whatever the value we are approaching to near to 10.5, that is called an accurate value,
and that is what we can say, that is the accuracy. And whatever the left in between, that is called your error. So this error may be due to instrument, that may be due to individual, and that error is very important for us. हमारे लिए साइंस में एरर मेजर किया जाता है, एंड एरर दो तरीके से मेजर किया जाता है. देयर कैन बी एब्सोल्यूट एरर और देयर कैन बी अ रिलेटिव एरर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स. सो लेट्स नाउ व्हाट आर द एरर. सो सबसे पहला जो एरर है, दैट यू कैन से एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. सो व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एरर? होता है कि दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू देख लेना. एब्सोल्यूट एरर इज, यू कैन से हियर, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू. अभी हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि आपके 30 बच्चे, हर बच्चे को अगर देखते हैं हम लोग तो एब्सोल्यूट एरर आएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू है 10.5 हमारा, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो सकता है? 10.4 हो सकता है, 10.45 हो सकता है ना, 10.6 हो सकता है, 10.55 हो सकता है, लाइक दैट. इन बिटवीन 10.4 टू 10.6 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है. दैट कैन बी ऑब्जर्व वैल्यू. वो हर इंडिविजुअल का अपना होगा, isn't it? So that's why we have this absolute error. So absolute error यहाँ पे आ जाता है मेरे पास. और दूसरा जो error है, that is you can say relative error. दूसरा जो है, that is nothing but you can say relative error. When we are talking about the relative error, that is also very important for us. So what is this relative error? मतलब साइंस में absolute error से ज्यादा हमारे लिए relative error बहुत ज्यादा होता है. So what is this relative error? So you can say absolute error upon ट्रू वैल्यू, ये होता है रिलेटिव एरर. साइंस में एब्सोल्यूट एरर से ज्यादा रिलेटिव एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो एरर दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर. और रिलेटिव एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट विल गिव अ मोर क्लोजर आंसर्स एंड मोर एक्यूरेसी विद दिस वन. सो this is nothing but absolute error upon true value. What is the true value? What is the accepted value? That is over here. But generally it is represented in percentage, and that's why we have to multiply it with 100. 100 से multiply करना पड़ता है. That will give you a relative error for the substance, or relative error for the measurement of data or value, whatever you observe to the experiment. That is what we can say. Clear with this? So this is the two things. There is a very important concept called accuracy. And what is this accuracy? Every experiment, every observation has a true value, has an accepted value, and the deviation from this one, deviation from this true value, nearness to this value is called as accuracy. Is called as accuracy. And this accuracy, whatever the accuracy, what is the accuracy left in between, that is called as least count. That means accuracy depends upon the sensitivity or called as least count. मतलब ये जो least count बताता है मैंने कि 0.1 का, 0.1 का, वो जितना कम होगा that is the more accuracy. वो जितना ज्यादा होगा उतना error ज्यादा है आपका, like that. So that is measured with this one, and that's why error is measured as the absolute error, and you can say relative error. Absolute error is, you can say, observed value, whatever by any individual, minus the true value or accepted value, and you can say relative error, which is absolute error divided by the true value, but it is generally presented into a percentage. That's why I multiply by 100. Percentage में आता था error, like that. Clear with this? So this is what we can say accuracy. Now we have to discuss this precision. What is this precision over here? So ये second part हमारे लिए important होता है. What is this precision over here? ठीक है. So now when we are talking about the precision, precision is very important. Precision is very important. But whatever the deviation from the mean value, whatever the deviation from the true value, that is nothing but the precision. That is nothing but the precision. And that's why precision is also measured in two different formats. And that is, you can say, here again, absolute precision, you can say, or you can say relative precision. दोनों आता है. And that is nothing but, you can say, precision की भी ये होता है, that is absolute precision. Or you can say deviation भी बोला जाता है. Precision is also deviation. How much you are deviated from the true value. True value से आप कितना deviate हो चुके हो. तो absolute deviation भी कहा जाता है और precision भी कहा जाता है. आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो. Absolute deviation is the modulus of, is equal to the modulus of observed value minus mean modulus of, like this one. So now see, this is, you can say, absolute deviation. Deviation is a prerequisite for high precision, or high precision is related with accuracy. Okay, how much precise your observation is, how much precise your answer is, that matters over here, and that is that depends upon the deviation, and that's why precision is measured in deviation. So precision deviation में measure कितना deviate हो चुके हैं हम लोग. 10.5 हमारा reading था, 10.5 से हम कितना deviate हो चुके हैं. That is what we can say, and this is nothing but, you can say, absolute deviation आता है, और absolute deviation is a measure of, it is a modulus of difference between observed value and mean. Mean कैसा है?
in order to have the precise value, in order to have the precision value, अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि आपको 10.5 ml एसिड लेना था, 10.5 ml, लेकिन आपको ऐसा कहा जाता है कि आप सिर्फ एक बार मेजर करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। आपको 3 बार अगर मेजर करने दिया जाए, 3 बार आपको वॉल्यूम लेना है 10.5, तो 3 बार हम वैल्यू लेने के बाद उसका जो मीन आएगा तीनों वैल्यू का, मतलब एक बार आपने मानो 10.4 लिया, दूसरी बार आपने 10.6 लिया, तीसरी बार आपने 10.5 समथिंग लिया, तो तीनों का मीन जो आएगा वो 10.5 के ज्यादा क्लोज आ सकता है। एंड दैट मीन वैल्यू इज हियर ओनली। दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग्स व्हाट वी हैव टेकन। हमने जितनी बार उसको मेजर किया उसके रीडिंग्स यहाँ पे आते हैं। दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर ऑफ observations or number of repeated values what we have taken here, that is taken here, and the observed value what we can say, this modulus is nothing but you can say absolute deviation. So this is very important. So precision depends upon the deviation, and deviation is like this one. Clear with this? Now the next is just क्या हमें इस तरीके से होता है, that is absolute error होता है, relative error होता है, absolute deviation है, वैसे relative deviation क्या है? Second is relative deviation. Relative deviation. Relative deviation क्या होगा? उसी तरीके से होगा. This absolute deviation. Absolute deviation upon mean. Upon mean. ये इसमें आएगा. Mean के फॉर्मेट में आएगा like this one. And again, जिस तरीके से यहाँ पे आया absolute error upon true value, उसी तरीके से relative deviation is absolute deviation. Okay. Upon the mean value. Mean यहाँ पे जो आता है वही arithmetic mean हम यहाँ पे लेते हैं. And that is also presented in percentage like this one. तो यहाँ पे भी ये percentage में आएगा. Yeah. So we have this one. So इस तरीके से हम लोग लेते हैं. That is what we can say precision. So clear with this? There are two things. Number one, when we are presenting the data has to be presented in more accurate manner. More accurate manner that has to be presented. And number two, that that has to be presented with the precision. Precision is nothing but the how much we are deviated from the mean reading, from the main reading, from the true value. That is the measurement of precision. The deviation is the way how we are going to measure the precision over here, what we have observed, what we have attained while presenting the data, while presenting the result of the observation of the experiment. And that is nothing but here, and that's why we can have the two errors here. That is number one is absolute deviation, precision के अंदर, और दूसरा है relative deviation. And modulus of difference between observed value and mean, and here it is a ratio of absolute deviation divided by mean, but presented into percentage, that's why into 100. So these are the two. अभी ये formula है, ये formula आपके exam में पूछे जा सकते हैं. That's what we have to keep it in mind. These are the important formulas: relative error, absolute error, relative error, absolute deviation, and relative deviation. So these are the two very important concepts which occurs while presenting the observations, while presenting the data, while presenting the result of the experiment. And that's why they are very important. In case of analytical chemistry, this is very important to have the accurate reading, to have the precise reading. So accuracy depends upon the least count, and precision depends upon the deviation over here, and that has to be least. दोनों जितने कम होंगे उतना हमारा observations और हमारा data right होगा, उतना result हमारा perfect आएगा. That's why this has to be taken into the care while presenting the data and all. Clear with this? Now let's move to the next topic. Next point related to this, nothing but the significant figure. So next is significant figure. ये भी टॉपिक आपने डिस्कस किया हुआ है फिजिक्स के अंदर. what is the significant, what are the significant figures? You have seen this one. So let's move to the significant figures. What do you mean by the significant figures? Significant figures का मतलब क्या है? अब देखिए 10.5 ये आपका मेन रीडिंग था. आपको बताया गया था कि 10.5 is the main reading. Reading what you have to take with the burette. 10.5 लेना. लेकिन जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 10.4 लेते हैं, मतलब ml भी बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ml कहेंगे. 10.4 ml लेते हैं और कुछ बच्चे लेते हैं 10.6 ml. ओके, सो इसके मतलब इसके अंदर जो लीस्ट काउंट है प्लस माइनस 0.1 का है. प्लस माइनस 0.1 का ये लीस्ट काउंट इसके अंदर आता है. क्लियर विद दिस? तो you have been asked to have the measurement 10.5, but due to many factors that may be in between 10.4, this 10.5 lies between 10.4 and 10.6. 10.6 is ज़्यादा allowed नहीं है because that is not the accurate reading, that is not the reading. और 10.4 के नीचे भी नहीं चलेगा because that is also not the accurate reading, because you are far away from that, you are far deviated from this one. तो accuracy and precision दोनों भी नहीं है उसके अंदर. So if your readings are in between 10.4 to 10.6, then these are accurate and precise reading. और precision के लिए many readings are taken. Accuracy के लिए least count कम करना पड़ता है. That may be like this is the accepted value.
here in science, plus minus 0.1. So we are here with significant figure. What is the significant figure here? So 10.5 ये आपका value है, ये आपका observation है 10.5. So when we are saying 10.5, significant figure is a measurement or is a result what we are presenting with 2-digit significant values, 2-digit significant value and 1 value with uncertainty. 2 values with certainty, 1 value with uncertainty. 1 digit with uncertainty. So 10.5 के अंदर this is a 10 figure. 10 is with certainty. Certainty. कोई भी बच्चा हमें से अगर रीडिंग लेता है बीरेट के ऊपर तो 10 तो certainly आना ही आना है उसका. 10 तो होगा. That is the value with the certainty. और ये जो 5 है, this 5.5 is with uncertainty. So this 0.5 is with uncertainty. And combination of both is called as a significant figure. So when we are presenting the data here in the analytical chemistry, they're always presented with the significant figures. So significant figures in the measurement or in the result always comprises of 2 digits with a certainty and 1 digit at least with uncertainty. Uncertainty. तो ये 5.5 uncertain है ना? 0.5 10 तो सबका आना ही आना है. ये 0.5 uncertain है. 0.5 के बदले किसी का क्या हो सकता है? 0.4 हो सकता है. किसी कितना हो सकता है? 0.6 हो सकता है. किसी कितना हो सकता है? 0.5 के लिए 0.55 हो सकता है, 0.53 हो सकता है, 0.45 हो सकता है. This is the uncertainty which is going to occur or which is going to happen due to any of the reasons. But that is there. That has to be considered. So that's why significant figures are the figures which has the combination of 2 digits which are with very certainty, has to be with the certainty, and 1 digit with uncertainty. That is nothing but the significant figures. And जिसके अंदर that depends upon this list count. List count जितना perfect होगा, जितना allowed है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा. यहाँ पे कोई बोलेगा मेरा 0.2 का difference आ रहा है, तो that won't be accepted in the science. ये यहाँ पे accepted नहीं है. Analytical chemistry के अंदर वो accepted नहीं है. Clear with this? So in that sense, what we can say, this is the significant figure. So कोई भी पहले हम लोग अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसी significant figures के अंदर उसे represent किया जाता है. ठीक है? And that is the way how we can represent the significant figures. Clear with this? So what we have discussed आज के lecture में हमने discuss क्या किया देखिए. Number one, what we have discussed, that we have the recap of the chapter, what we have seen here in the chapter. So we have seen what is the importance of analytical chemistry, then what is analysis, what is qualitative analysis, what is quantitative analysis, what is the chemical methods for qualitative analysis of organic substances, inorganic substances, chemical methods for quantitative analysis of organic substances and inorganic substances. Then we have seen the mathematical operations or data which has to be presented, and we have seen how to present the data. So there we have seen the scientific notation n into 10 raised to n. So वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. फिर उसका एडिशंस कैसा होता है, उसके सब्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं और उसके मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं. That is due to the laws of exponent what we have seen over here. और उसके बाद देखा हमने that you can say precision and accuracy. What is accuracy? What is the precision? And what are the formulas? What is absolute error? What is relative error? What is absolute deviation? And what is relative deviation? That is what we have seen. And lastly, we have seen the significant figures. Clear with this? कल के लेक्चर में और कुछ टॉपिक इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड विल गो अहेड विद दिस. सो आई अपील कि आज ये जितना देखा है थोड़ा सा रीड कीजिएगा ताकि अगले कल का चैप्टर को अच्छी तरह समझे और अच्छी तरह समझे. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो.